हम्म Yes, Rabia, what happened? Rabia? So I think my mic wasn't working in between. I read the question. Yeah. Read the question. Yes, sir. How would you obtain the following? 2-methyl propan 2-ol from methyl magnesium bromide. Fine. And so, in what you have done? ऐसा लग रहा है आपने सवाल तो पढ़ा ही नहीं। Rabia, tell me. Sir, I wrote the wrong one. फिर कहाँ से किया, मतलब लाइक ये सवाल है कहाँ? Whatever you have written. Rabia. Rabia, will you speak? Yes, sir. Tell me what happened. Sir, I wrote the wrong one. Sorry, what did you say? I wrote the wrong question, like the wrong answer. Okay. Wrong answer नहीं, आपने सवाल भी वो सही नहीं पढ़ा है. And I think 30 वाला सही है आपका. उसके बाद I think that's fine. ये आपने शायद कहीं और से कुछ पढ़ लिया है. ठीक है, चलिए खैर. Yes, sir, I got confused. I'll resend the answer. Yeah, sure. And others, did you try these questions? Mariam Khatun, Mariam Parker. Yes, sir. जब खातून आपने ट्राई किया था, आपसे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैंने भेजा था. अच्छा, आपने भेज दिया है. लर्निवियो को भेजा था? Yes, sir. तो पार्कर ने नहीं भी किया वो, ठीक है.
मरीम खातून, आप जब पढ़ रही हैं खुद से आपको समझ में आ रही हैं चीजें? Yes, sir. Okay. तो ठीक लग रहा है आपका। खुद से किया आपने मरीम खातून? Yes, sir. राइट सम क्वेश्चंस। क्या क्या कराए थे लास्ट क्लास में? Can you please write the answers for these molecules? Okay, please send the answers, guys. 2 minutes are over. We have got some answers, I guess. Aisha has given. नहीं, भूल गई आयशा। आयशा भूल गई, कुछ रिवाइज नहीं किया आयशा, है ना? हाँ आयशा, कुछ रिवाइज नहीं किया ना आपने?
Sir, I forgot. I didn't see the catches. कुछ रिवाइज नहीं किया इसलिए भूल गए सारा. See here guys, LiLH4 is a reducing agent. This double bond O will convert to OH. Now for this you have to identify where is the carbonyl carbon. This carbon, this oxygen is going to get the OH, and the CH3 from Grignard reagent is going to attach on this carbon atom. ठीक है. Now here also this CHO is actually C double bond O. So 1, 2, 3 carbon atoms. This carbon atom will get the OH, and this carbon atom will only get the CH3 which is attached here. Please write this down. क्या हुआ राबिया एंड मरियम खातून, ये सब नहीं हुआ आप लोगों से? मरियम खातून, ये नहीं हुआ आपसे? भेजिए जरा जो जो किया आपने. भेजते क्यों नहीं है आपको तुरंत जब हम बोलते हैं भेजने के लिए? बाकी हो गया था ना मरियम खातून? जी सर. अच्छा, वेरी गुड. मरियम खातून बिल्कुल हमसे उकता गई. आप लोगों को पता है उकताना मतलब क्या होता है? उकता जानने का मतलब पता है आप लोग को? Yes, हाँ sir. मत. अच्छा, उकताने का मतलब. मरियम खातून आपको पता है उकताने का मतलब? नहीं सर. ऐसा नहीं पता. आजिज आ जाना पता है? आजिज आ जाना नहीं पता है? सर कितना बोलते हैं सर, हम ही को बोलते रहते हैं पूरे क्लास में. अरे अभी सुन लीजिए माँ, अभी सुन लीजिए, है ना? तो फिर मार्क्स आपके सुनने लायक आएंगे, है ना मरियम खातून? अभी आप मेरी डांटों को सुन लीजिए तो फिर आपके मार्क्स आएंगे जो आप सुन सके. सही है? बस गर्मी छुट्टी भर, है ना? उतना ही टाइम है आपके पास. उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तब तो फिर आपके पास भी टाइम नहीं बचेगा ठीक करने के लिए. तो गर्मी छुट्टी भर भी हम ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे कि आपका ठीक हो जाए चीजें. फिर उसके बाद जैसी चीजें चलती हैं उसी तरह मशीन ऑयल हो जाना चाहिए गर्मी छुट्टी तक ना. गर्मी छुट्टी जब तक है उस टाइम मशीन का ऑयलिंग ऑयलिंग सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद तो फिर आपका हाथ चलेगा, है ना? फिर ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास. एंड वी हैव डन a few methods of preparation till now. We have done from alkenes and we have done from carbon. अच्छा, ये ध्यान रखिए रिवाइज करना है पुराना भी. alkenes वाला भूल मत जाइएगा आप लोग, ठीक है? Today we are going to look a few new method of preparation for alcohols and phenols. Alcohols and phenols also we are going to do today only, okay? तो आज आप लोग का method of preparation of alcohol and phenol दोनों खत्म हो जाएगा. ओके, सो अच्छा एक और आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. How was I writing these things? From blue. So this will be third method of preparation. From carboxylic acid. Now, important point to note down here is when carboxylic acid is reduced using lithium aluminium hydride only, LiLH4 only, सिर्फ LiLH4, okay? You cannot use any other reagent. Using LiLH4, then it gets converted to 1 degree alcohol. It gets converted to 1 degree alcohol. Okay, with same number of carbon atoms. Okay. Achha, give me a second. Okay, with same number of carbon atoms. That means if you have R, please see here C double bond OH, COOH, and you use LiAlH4, then you will get R. This carbon atom will be same and CH2OH. So for example, if you have CH3, C double bond O. I hope carboxylic acid का structure पता हो आप लोगों को.
ठीक है। नाउ प्लीज सी हियर गाइस, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आई एम गिविंग यू अ मॉलिक्यूल समथिंग लाइक दिस, and here we have double bond O. And what we are using lithium aluminium hydride. Now this will be converted to, now this ketone will be converted to alcohol because a lithium aluminum hydride will reduce it. Similarly, carboxylic acid will also be getting reduced. So here we are having 5 carbon atoms. Fifth carbon atom will get OH, and the second carbon atom will also get OH. But if we have the same compound, and here we have double bond O, and instead of lithium aluminum hydride, we are using NaBH4. Now this becomes what? This carboxylic acid is not going to react. It is going to be the same, and you are going to only convert the ketonic carbon to alcohol. The COH will be the same, and here you will get OH. Why? Because carboxylic acid can be reduced only using what? Lithium aluminium hydride, no other reagent. Okay. So अगर lithium aluminium hydride आ जाए, please listen very carefully. Lithium aluminium hydride आ जाए तो आपको क्या मिलता है? Alcohol. You are going to get alcohol, whether it is ketone, whether it is aldehyde, or even if it is carboxylic acid. इसी वजह से इस वाले रिएजेंट को हमारे सर बोल देते हैं दारू का ठेकेदार। क्या है? दारू का ठेकेदार। ठेकेदार जानते हैं आप लोग? यू गाइस नो व्हाट इज ठेकेदार? No, sir. ठेकेदार नहीं पता किसी को? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। दारू पता है आप लोग को? दारू पता होगा आप लोग को, है ना? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? इसको कहते हैं दारू का ठेकेदार, बिकॉज कुछ भी आ जाए क्या कन्वर्ट कर देगा वो? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। प्लीज राइट दिस डाउन। Second one again. Aisha. Aisha, CH3 is here. CH3 is here. This carboxylic acid का structure ये होता है ना, C double bond OH. So this is getting reduced, this carbon atom, and it is getting converted to OH. So CH2OH आ जाएगा. Write this down. Let me know once you're done. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. राइट अ नोट। अब नोट देखिए, नोट लिखिए। ये तो सिंपल सवाल हो गया। अगर आपसे बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अंदर से अगर सवाल पूछना चाहे ना, तो यहाँ से पूछिएगा। प्लीज राइट। Since lithium aluminium hydride is very expensive, lithium aluminium hydride is what it is? A very expensive reagent. ठीक है। Therefore lithium aluminium hydride को ना ऐसी रैंडम किसी भी चीज के लिए नहीं यूज किया जाता। अगर if you want to do very large type of large type of conversions जिसमें you have to use very large amount of lithium aluminium hydride, तो वैसे reactions में we don't use lithium aluminium hydride, है ना। जहाँ पे छोटा सा कुछ reaction करना हो, you need less amount of product, है ना, तो उसको special chemicals बोलते हैं। स्पेशल केमिकल्स आ जाएंगे जैसे आपके कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, है ना। स्पेशल केमिकल्स में आ जाएंगे आपका ड्रग्स वगैरह हो गए, तो वो बहुत छोटा छोटा अमाउंट चाहिए रहता है। अगर आपको हेवी केमिकल्स, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह के प्रोडक्शन में इट इज हेवी केमिकल, ऑयल्स वगैरह के प्रोडक्शन में इट इज हेवी केमिकल्स, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वी आर गोइंग टू यूज इट। तो वैसे चीजों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। तो फिर क्या करते हैं सर? करते ये हैं, इज वेरी एक्सपेंसिव, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड
is converted to ester, and on further catalytic hydrogenation, it gives alcohol. ठीक है, प्लीज ध्यान से पहले रिएक्शन देख ली, रिएक्शन क्या हो रहा है. You have RCCOOH. You are going to react this with an alcohol. An alcohol will be some R-OH. Okay, it's going to be R-OH. This will be done in the presence of a bit of acid, and then you are going to get RCOOR. One of the oxygen is doubly bonded to carbon, and one of the oxygen is singly bonded to carbon and alkyl group. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. होप यू गाइस नो दिस. 11th स्टैंडर्ड में सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे ये R डैश लग जाएगा बिकॉज हियर वी हैव द अल्कोहल. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईस्टर. दिस इज ईस्टर. नाउ आफ्टर दिस you just need to hydrolyze it. That means you need to add, sorry, not hydrolyze, you need to hydrogenate it H2 in the presence of nickel PD or PT. Let us take nickel, any catalyst, and this will get converted to RCH2OH. Got this? Yes or no? Please tell me. Okay, then you will write lithium aluminium hydride can also convert esters to alcohol. ठीक है, अगर आपके पास रिएक्शन इस तरह से आ गया, लेट अस सपोज यू हैव RCOOR dash and you are going to use lithium aluminium hydride. ठीक है, what you are going to use? You are going to use lithium aluminium hydride. अब जब आप lithium aluminium hydride इस केस में यूज करेंगे, then you are going to get 2 alcohols. ठीक है, कौन से 2 अल्कोहल मिलेंगे? एक तो आपको RCH2OH मिलेगा, प्लस यू विल गेट R-OH. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O, oxygen CH3. You have lithium aluminium hydride. Then first of all, this bond is going to break. This oxygen will get hydrogen. This carbon also will get a hydrogen. ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा. So you can see the product. This is going to be CH3, CH2OH, plus you will get CH3OH. Then everyone is please tell me. ठीक है, this is called carboxylic acid. From carboxylic acid, write the fourth one. Fourth method of preparation. From haloalkenes. ठीक है, from haloalkenes. Please write. When haloalkenes are treated with aqueous KOH or aqueous NaOH, they give corresponding alcohols. They give corresponding alcohols. Now we have seen this reaction in haloalkene chapter, although Rx is plus, very easy, aqueous KOH. So OH is going to replace the halogen atom from here.
Now the OH atom is going to attach on the same carbon जहाँ पे halogen लगा हुआ था. For example, you have ethyl bromide plus, let us suppose you have aqueous KOH. So you'll make the 2 carbon atoms and second carbon में OH लग जाएगा, plus you will have KBr. And if you have OH in the second carbon of 3 carbon atoms, now instead of Br you can use anything else also. Let me write something else. Chlorine plus aqueous NaOH plus NaCl. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now write a note. Degree haloalkanes gives mixture of alcohol and alkene on treatment with KOH. ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है? Therefore it is not a, yes tell me. थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही. This is alkene. Is everyone done? Yeah. Yes. Now this will be for fifth preparation. Please write. From aliphatic amines. Aliphatic amines, aliphatic also primary amines. Aliphatic primary amines. Okay. Now please write. When amines are treated with nitrous acid. Nitrous acid is HONO. ONO. Nitrous acid, they give primary alcohol. They give primary alcohol. That means you have R CH2 bonded with nitrogen and 2 hydrogens like this. Okay. And you are going to react this with what? ONO. What is ONO? Nitrous acid, HON. अब यहाँ पे क्या होता है? Please see. The HO, it gets attached to this carbon atom. जो नाइट्रोजन है वो किससे अटैच हो जाता है? दिस नाइट्रोजन से. और एक जो बचा हुआ ऑक्सीजन किससे अटैच हो जाता है? ये दोनों हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है, राइट? So what we are going to get R CH2OH plus nitrogen plus N2 gas plus H2O. याद रहेगा सबको? हाँ या ना बताएं? याद रहेगा? हाँ या ना? वेरी गुड.
डन ना? चलिए राइट, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. Please write number 1. From benzene sulfonic acid. Now, what happens here? Please write. We are going to start with a benzene ring, or benzene ka we are going to do sulfonation. Sulfonation reaction is there in 11th standard. Maybe you remember it. Concentrated H2SO4. In the presence of SO3 gas, you are going to get benzene sulfonic acid. Benzene ring with SO3H. Now, further, this is treated with NaOH. And not also in a very small temperature, very high temperature. NaOH at 623 Kelvin temperature and also high pressure. And you get here the sulfonic acid SO3H group has been replaced by ONA. This is known as sodium phenoxide ion. Now this sodium phenoxide ion, it is easily treated with H plus in the presence of water to give phenol. Okay. Please remember this portion is there in your 11th standard. बस ये रिएक्शन यहां से यहां तक का ये 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, फॉर 12th क्लास. इसको लिख भी लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी, समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है हर एक स्टेप में. प्लीज राइट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन किसके साथ? प्लीज राइट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन विथ ओलियम. ओलियम क्या होता है? ओलियम इसका मिक्सचर को बोलते हैं. ठीक है, इसका कॉमन नेम फॉर द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 गैस. ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा ओलियम, तो ओलियम देखिए घबराना नहीं. ओलियम का मतलब सिर्फ क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 गैस गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Benzene sulfonic acid, and on further treatment with NaOH in high temperature and pressure gives sodium phenoxide. Gives sodium phenoxide, which on hydrolysis gives phenol. Okay, this is benzene. Okay, this is benzene. ये आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, sodium phenoxide and phenol.
Done everyone is to please tell me. Yes, sir. अब देखिए सिमिलर रिएक्शन है सेकंड वाला, प्लीज राइट. From halogens. If you remember from halogens how we did in halorine chapter, here we have, let us suppose, chlorine. We reacted this first of all with NaOH. Kelvin pressure, sorry, 623 Kelvin temperature and high pressure. In the second step, I'm going to add water in the presence of acid. This chlorine will be substituted by OH. Chlorobenzene. This is phenol. ये पुराना रिएक्शन है, आसान से बिल्कुल. थर्ड लिखिएगा. From disonium salts. Now, what is disonium salt? How do we prepare it? उसको भी लिख लीजिए. Although this was in halorine, but ये preparation बहुत important है. That is why you will start with aniline. Aniline is NH2 in, sorry, aniline is benzene attached with NH2. Now, in the presence of NaNO2 and HCl, this gives nitrous acid in C2. I hope you remember that. And this will be between 0 to 5 degrees Celsius, very less temperature, cold temperature. This is going to give you N2 positive and Cl negative. Now, if you are going to warm this in the presence of water, you just need to do what? You just need to warm it in the presence of water. So H2O and a bit of heat. The N2 positive is going to leave and it will be substituted by OH. So we have got phenol. This is benzene, this is disonium salt. Disonium chloride to be exact, and this is phenol. पानी अगर डाल दीजिएगा डाइसोनियम सॉल्ट में, it will become aqueous benzene disonium salt. Please write. When aqueous benzene disonium salt is warmed, it gives phenol. It gives phenol. Write the fourth one. This is important. Please write from cumene. ठीक है. अब what is cumene? बहुत आसान है, ज्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं है. आप स्टार्ट कीजिए बेंजीन से. Even though this reaction does not start with benzene, जहां से याद करना वहां से हम बता देंगे benzene, and you are going to treat this with let us suppose something like this: CH3, CH, CH3 and chlorine. ठीक है. अब अगर याद हो आपको, ये 11th में एक रिएक्शन है इस तरह का. अब इससे आप बना दीजिए क्या, AlCl3 में रिएक्ट करके. So this chlorine is going to get attached with aluminium chloride, and this carbon atom will attach to benzene ring. And when it attaches to benzene ring, this is known as cumene. What you have? You have carbon atom attached with hydrogen. This is further attached with CH3 and also one more CH3. तो ये isopropyl chloride है. This is what isopropyl chloride. This is benzene. This chlorine atom जिसमें कार्बन लगा हुआ, that gets attached to benzene ring, और ये क्या बन जाता है? This is now cumene. Okay, so cumene ऐसे बनाते हैं. ठीक है, 11th क्लास का रिएक्शन ये. Now from cumene,
CH3 CH3, ठीक है। अब आगे इसमें आपको बस ऑक्सीडेशन करना है, दैट मींस ऑक्सीडेशन आल्सो इन एयर, बहुत सस्ती चीज O2। O2 does an insertion reaction यहाँ पे, and it inserts between the carbon hydrogen bond, forming peroxide bond like this. Oxygen further attached with oxygen, and then you have hydrogen. Here you have CH3 as it is, and यहाँ पे आपके पास CH3 as it is, ठीक है। Next is H2O in the presence of H+. अब क्या होता है, दिस पार्ट, ये पार्ट टूट जाता है और ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैक, ठीक है। सो OH will get attached in the phenol. OH will get attached and it will form phenol. अब ये बचा हुआ क्या है, the remaining part is CH3. This is attached with carbon, further attached with CH3, और ये कार्बन further attached है ऑक्सीजन से, तो doubly bonded carbon atom. So you get phenol as well as acetone. क्या मिलता है, acetone. Both of these are very useful elements, ठीक है। Both of these are very useful elements, not elements, compounds है ना। Both of these are very useful compounds, and that is why this process is also a commercial way of preparing phenols. Please write phenols are commercially prepared using cumene as it gives acetone as byproduct, which is a useful compound. So please write this down. Let me know once you're done. Anyone still writing? Anyone still writing? No, right? चलिए, अब आप लोग के पास टाइम है, थोड़ा ये बता दीजिए। अभी तक वी हैव डन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आल्सो एंड फिनॉल आल्सो, है ना। अब आपके पास देखिए फिर से एक काम आ गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एक शीट में आपके पास रहना चाहिए, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। अल्कोहल, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन्स। Now in alkene we have two methods. We are going to use H2 in the presence of H plus, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम लिखवाया है ना हमने, या नहीं लिखवाया, A और B वाला B B B हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ ठीक ठीक है। सो एल्कीन से दो मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट इज विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन है, और एक क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGBR वाला। दो मेथड एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी हैव ईस्टर, और उसके बाद क्या है, एंड देन वी हैव हैलोएल्केन
और उसके बाद क्या है, अमीन RNH2, राइट। इतनी ही तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हाँ या ना बताएं। अब ये बताइए, Yes, हाउ sir. मेनी ऑफ, प्लीज बताइए हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट। अगर डाउट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर हम सारे से कुछ ना कुछ सवाल देते हैं, ठीक है ना। आप लोग सब कुछ बनाना आना चाहिए। आप लोग ले लीजिए आराम से, 7 मिनट लीजिए आप, है ना। 7 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट गिविंग यू सम क्वेश्चंस। Now, when you are revising, please passive revision मत कीजिएगा। Alcohol preparation with alkene, it forms Markovnikov rule। ये तो हो जाएगा हमसे, आता है मेरे को। ऐसे नहीं करना रिवाइज, ठीक है ना। You are going to do step by step. Okay, fine. We have 3 carbon atoms, and then double bonded is in the second carbon and third carbon. Then water is going to attach in the carbon which is having less hydrogen. So this is having this many hydrogen. This is having this many hydrogen. इस तरह से आपका रिविजन होना चाहिए, ठीक है। बस समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं। आयशा, मरियम एंड राबिया, है ना, ठीक। आलिया, आपको सबको आया, आपको तो आया ना सारा, आया ना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये बताएं आलिया, Yes, sir. आपने आजम सर से बात की टेस्ट के बारे में, आपको टेस्ट कैसे देना है। सर मैं भूल गई, मैं आज बात कर लूंगी। अच्छा, हम्म, बात कर अच्छा अच्छा, सर आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है जी, लिखें। whenever you have to tell me ना to scroll up or down, please like माइक ऑन करके बोल दिया करें। सॉरी व्हाट पार्कर, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक से बात करें माइक में। एस्टर, दिस पार्ट ना,
चलिए, everyone done revising? Yes or no, tell me. हो गया ना सबका? चलिए, write a question. एक बात बताएं, राबिया, you are here from second class में method of preparation of alcohol से आप हैं, starting from alkenes. Yes or no, राबिया? Yes, sir. आप है ना starting से, ठीक है. Write the products for following. Write the products for following and also their names.
just one reminder to everyone, when I will say ना, please send the answers. So you are going to send the answers, whatever you have done. ठीक है? अब उस टाइम प्लीज हमें इंतजार मत कराइएगा. ठीक है? As soon as I say, please send the answer. आप पेन रखिएगा, चाहे आपने आधा भी बनाया हुआ हो, तब भी आप पेन रखिएगा, फोटो खींचिएगा, आंसर भेज दीजिएगा. Is that clear? Yes or no? Rabia, Mariam Parker, Mariam Khatun, Aisha and Alia. Yes, sir. ठीक. वैसे you guys have 6 more minutes. तो 6 मिनट आपके पास और हैं, आप आराम से कीजिए. Also one more thing, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे. What would you prefer to get the reminder about organic chemistry classes a day before or on the same day? Because the class is going to start at 10 o'clock in the morning, Kingdom of Saudi Arabia time. Saudi Arabia time के मुताबिक it is going to be on at 10 o'clock. जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, आप क्या चाहते हैं, कब आपको मैसेज मिले? एक दिन पहले या फिर सेम डे? हाँ जी, A day before. a day before, right? ठीक है. Parker has sent the answers. 1, 2, 3 is correct, Parker. Guys, you guys have 2 more minutes. अच्छा, किसी मैसेज क्या आ रही है? मैसेज क्यों देखते हैं? हाँ, yes, yes, आ रही है. It is actually HONO. HO लिख दिया है हमने, my bad.
Fourth is correct, very good. Fifth is also very good, correct. Sixth भी सही है, very good. Seventh भी सही है. अच्छा, एट्थ नहीं हुआ आपसे, ठीक है. नाइन्थ हो गया आपसे, वेरी गुड. टेंथ भी हो गया आपसे, ठीक है, वेरी गुड. एट्थ वाला देखिए आप, मरियम पारकर. Yes, देखिए, sir. कराया हुआ है हमने सवाल. सेवेंथ वाला सही नहीं है, आयशा. सेवेंथ वाला सही करें प्लीज, आयशा. सेवेंथ वाले में देखिए क्या दिक्कत है. पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है. फोर्थ वन करेक्ट, फिफ्थ वन करेक्ट, सिक्स और सेवेंथ में गलती है. एट्थ सही है, नाइन्थ नहीं किया आपने. अच्छा, टेंथ सही है. सिक्स और सेवन में बताइए आयशा क्या गलती है. सिक्स और सेवेंथ में देखिए क्या गलती हो रही है आपसे. राबिया एंड मरियम खातून एंड आलिया, प्लीज सेंड द आंसर्स. आलिया एंड मरियम खातून, प्लीज सेंड द आंसर्स. चलिए, आलिया, सॉरी, मरियम खातून पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, वेरी गुड. चौथा भी सही है, वेरी गुड. बहुत बढ़िया. फिफ्थ भी सही है, अरे वाह. सिक्स में देखिए कुछ छोड़ दिया आपने. सिक्स में देखिए सेवन सही किया आपने, वेरी गुड. एट्थ आपने कंप्लीट नहीं किया. नाइन टेंथ आपका कंप्लीट है, वेरी गुड. सिक्स और सेवंथ में देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है. सिक्स में देखिए, सेवंथ तो सही है. चलिए, ठीक है. तो मरियम खातून, आपको अब धीरे धीरे आ रहा है, सही है, आया ना. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. आपने अलग से पढ़ाई, मतलब आपने अलग से इसको बैठ के सोच समझ के बोल बोल के किया, कैसे किया आपने, बताइए जरा. क्योंकि दिस इज लर्निंग फॉर मी ऑल्सो. स्टूडेंट्स किस तरह से चीजों को, जो मान लीजिए कोई चीज में कमजोर रहता है, फिर वो कैसे अपने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ठीक कैसे करता है, दैट इज अ लर्निंग फॉर मी. आप बताइए, थोड़ा शेयर करें क्या किया आपने. रिवाइज करी थी आज सुबह सुबह. नोट से, नोट से हम्म. रिवाइज कर रहे थे, बस आपने टाइम स्पेंड किया, राइट. Yes, sir. मेनली वही किया है ना. और चीजों को कैसे रिवाइज कर रहे थे. रिवाइज करना तो बहुत जेनरिक टर्म हो गया, थोड़ा डिटेल बताएं. वीडियोस भी लगाया था, समझ रही थी, सारी कोशिश कर रही थी. यूट्यूब कोशिश वीडियोस कर रहे थे. फिर से बताएं क्या कर रहे थे. यूट्यूब वीडियोस भी लगाकर देख रही थी मैं कि चैप्टर. हमारा लेक्चर, किसी और का लेक्चर. सो मुझे नहीं पता किसका था बस. अच्छा, ऐसे ही लगा के आप देख रहे थे और नोट्स में वही चीज रिवाइज कर रहे थे. यस सर. ठीक है. ओके, राबिया, देखिए राबिया ने गलती की है फर्स्ट क्वेश्चन में. बताइए क्या गलती है राबिया. राबिया बताइए क्या गलती की है आपने पहले सवाल में. ठीक है, आलिया, हम आपका देख लेते हैं. आलिया, सेवंथ में पता चला क्या गलती है. आलिया, आलिया सॉरी सॉरी, आयशा, सेवंथ वाला पता चला क्या गलती है. नॉट I आलिया, got आयशा. the sixth one, but I didn't get the seventh. सिक्स में क्या गलती थी आपकी. सेम गलती है सेवंथ में भी, देखिए, है ना, आया ना.
Yes. समझ में आ गया? ठीक है। राबिया बताएं आप पहले सवाल में क्या गलती है? आप यू फ्लिप सम पेजेस ना, आप जाएं उस पोर्शन में, एल्कीन वाले पोर्शन में जाएं और देखिए क्या गलती की आपने पहले सवाल में। सेकेंड वाला भी आपको गलती है, थर्ड आपका सही है, फोर्थ में आपने थोड़ा सा मतलब ऐसे खेल गई हैं आप, है ना, कि CH2 से भी बॉन्ड हो अगर तब भी सही हो जाएगा, CH3 से भी बॉन्ड हो तब भी सही हो जाएगा, है ना राबिया? आपने ऐसे बीच में लगा दिया कि जो ऐसे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस और नॉट, ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन था और एक बच्चे ने ऐसे आंसर किया था, आई डोंट नो हाउ दे आंसर, इट वाज वेरी क्लेवर वे टू आंसर दैट, ऐसे करके। पता नहीं कैसे था, अच्छा था वो लेकिन काफी। गॉट इट। है ना, ये एक तरीका है ट्रू फॉल्स के आंसर लिखने का, मतलब ट्रू का ट्रू भी हो गया, फॉल्स का फॉल्स भी हो गया। हैव यू गाइस सीन दिस? Yes. ठीक है, तो राबिया कुछ, अरे कुछ बोल ही नहीं रही है राबिया आप तो। राबिया व्हाट हैपेंड? चलिए तब तक हम आलिया Nothing, का sir. देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखा आपने? फ्लिप सम पेजेस, रिवाइज करके मतलब देखिए ना पुराना जो आपने किया था, एल्कीन का प्रिपरेशन, वहां पे क्या गलती है? ठीक है। अच्छा आलिया, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बॉन्ड लाइन उतना, आई थिंक सो, राइट आलिया? Yes, sir. बॉन्ड लाइन लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि ये Okay. बॉन्ड लाइन बहुत बहुत टाइम बचता है बॉन्ड लाइन, है ना? Yes, sir. ठीक है, फाइन, आपके आंसर्स तो ऑलमोस्ट आई थिंक सही ही हैं, एक्सेप्ट द फिफ्थ वन। देखिए फिफ्थ वाले में क्या गलती की आपने, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में गलती है। फोर्थ वाला में आप भी खेल गई हैं, हाँ आलिया, बताइए फोर्थ वाले में बताइए कौन से कार्बन पे, किस पे लग रहा है, CH2 या CH3 पे? CH2 पे वो मैंने गलती से कर दिया था, फिर मैंने CH2 CH3 that is like ठीक, हाँ गॉट। राबिया आपको नहीं समझ में आया फर्स्ट में क्या गलती है राबिया? यस राबिया? No, sir. अरे चलिए ठीक है, आपने आप वो पेज निकाला हुआ आपने जहाँ पे हम लोग एल्कीन की रिएक्शंस कर रहे थे वाटर के साथ, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन? Sir, actually, I wrote it in a different book, and एंड यू डोंट हैव दैट? no. हाँ चलिए ठीक है, दैट मेक सेंस, तब आपको नहीं आएगा ना। सो सी दिस गिव्स मी, अच्छा ये आपको देखिए हम आप बता देंगे तो बहुत आसान लगेगा, बट इट वुड हैव बीन मच 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 बेटर अगर आप ये खुद से समझ में आता कि क्या गलती की है, ठीक है? लर्निंग वहीं पे एक्चुअली होती है, आप खुद से देखते हैं तब समझ में आता है। यू आर गोइंग टू गेट अल्कोहल ओनली ना, डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा, राइट? इफ यू रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू डू इट, वी यूज्ड टू मेक एवरीथिंग एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड, पहले आया ना, राइट? Yes, sir. And then we used to attach OH on which carbon atom? If it is water, then on the on that carbon atom which is having less number of hydrogen. तो यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, right? We're going to attach here OH. In this case you have OH, same number of carbon atoms. बाकी सब आपने सही किया है, बस डबल बॉन्ड आप भूल गए हटाना। I hope you remember it now. Yes, sir. OH and CH2 CH3, है ना? तो बॉन्ड लाइन में देखिए कितना आसान हो गया, CH2 CH3। फिफ्थ वाले में I'm really happy with the way मरियम bounced back, कि उन्होंने CHO में बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसे एक हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल OH लिखा, और अच्छा CH3 है ना बस। मरियम ने क्या किया, मरियम खातून,
मरियम खातून आपने ऐसे क्यों किया है? मरियम खातून, you did it like this ना? हाँ मरियम, Yes, sir. ये इसका क्या मतलब हुआ? You have done it like this ना? This fifth one देखिए जरा. तो वो मैं कर रही थी। Sorry, टीचर ने खुद को समझा रही थी, कुछ कहीं मैं चेक कर रही थी सही कि नहीं, गलती से हो गया। यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी CH3 यहाँ पे है ना? वो आपने फोटो भी सही से नहीं भेजा है. यहाँ पे CH3 आएगा, ठीक है? Okay, sir. Now, then next question is going to be OH here and OH here. Because this is aldehyde, it can be converted by NaBH4 also, and in this case, you are going to have OH here. अच्छा आलिया, आपको फिफ्थ वाला देखा आपने? आपको सही किया आपने, हाँ या ना? Yes, sir. गलत किया। हाँ, सिक्स्थ वाला भी सही कर लिया आपने? Yes, sir. अच्छा ये वाला तो ओलियम के साथ रिएक्शन था ना, OH. अब आप बोल रहे हो सर सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया आपने सर, SO3 नहीं दिया. तो आपको देखना है कौन सा रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है? सो SO3 इज नथिंग एक्स्ट्रा, हम कुछ नहीं ऐड करते. व्हेन यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो उसी में SO3 गैस के फ्यूम्स अपने आप निकलते, ठीक है? नाउ हियर वी हैव 2 कार्बन एटम्स एंड देन OH. एंड यहाँ पे किसने बहुत अच्छे से किया था? आई थिंक इट वाज मरियम पार्कर, आई थिंक सो. पार्कर या फिर आयशा, इनमें से हाँ, मरियम पार्कर ने बहुत अच्छे से किया. दिस इज गोइंग टू गेट OH, इसको मिल जाएगा नाइट्रोजन और इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन, है ना? तो यहाँ पे आपने मेजर प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा, और एक चीज जो है वो किसी ने नहीं की, नाम किसी ने नहीं लिखा, है ना? ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से नाम लिख लेते हैं सारा का. तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू हैव OH ग्रुप, और बाकी कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो लास्ट में तो ऑल आएगा. एंड दिस देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट आल्सो, so this is going to be the parent will be cyclohexane because there is no double bond, and one all because we are going to start numbering from here. Now इसको ना एक बात आप आपको बताते हैं, because you will not get every time स्ट्रक्चर से आपको नाम नहीं, आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत बार आएगा, ठीक है? बहुत बार जरूरत पड़ेगी. Now this can be written as cyclohexanol also, cyclohexanol, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 2 कार्बन एटम्स, सो ईथेन, एथ, AN because there is no double bond, all because we have OH, है ना? ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन we don't need to. This is obviously going to be phenol. Now this is going to be 1 2 3 4 5, so this is going to be pentanol. Now here what we have, we're going to start numbering from here 1 2 3 4 and 5. This is also pentane 1,4 diol. अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, 1,4 पेंटेन डाइल, ठीक है? ऐसे भी लिखा जाता है 1,4 पेंटेन डाइल. का क्या मतलब है? डाई का ये 1 और 4 किसके लिए? डाई के लिए. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी दिस? यहाँ पे आपके पास यू हैव 2 कार्बन एटम्स, OH इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे you have 2 कार्बन एटम्स and this is going to act as a substituent, so this will be cyclohexyl, cyclohex. Why? Because it is having 6 carbon atom, it is a ring, and YL because it is a substituent. अब यहाँ पे देखिए longest carbon chain वाला रूल अप्लाई ही नहीं होगा, because आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे? It is not in the ring, it is outside the ring. Cyclohexyl, and here we have 2 carbon atoms. So this is going to be one cyclohexyl, ethane on. One cyclohexyl, ethane one all, or ethanol you can write. Now what is going to be this one? अब यहाँ से start हो जाएगा 1 2 3 4. No, that will not be the numbering. Numbering will start from the carbon atom which is nearest to the functional group. So 1 2 3 and 4, and this is going to be a substituent. So substituent is methyl, and methyl is in second carbon atom, so it is going to be 2-methyl. Obviously this may seem a bit fast for you guys who are in 12th standard, लेकिन धीरे धीरे आपको भी ऐसे करने आ जाएगा, ठीक है? So this is 2-methyl, and we have 1 2 3 4, that means it is going to be butane, and OH is in the second carbon, so it is going to be 2-all. Now we can also write this 2-methyl
2 ब्यूटेनॉल। अब ये 2 किसके लिए आया है? ये ऑल के लिए आया है, ठीक है ना? ये 2 किसके लिए आया है? इट इज बीइंग फॉर ऑल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। जैसे यहाँ पे दिस 1 2 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। Prop for 3 carbon, AN for no double bond or triple bond, and all for the OH group. Now here we have 1 2 3 4, so this is going to be butane 2 on, or you can also write it as 2 butanol. Okay, so that 2 is for which? This 2 is for OL. Okay, तो इट इज नॉट पर्टिकुलरली आईपैक नहीं, जब ये स्ट्रक्चर से नाम बनाने आए तो आप इसको लिखिएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए अगर 2 ब्यूटेनॉल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है। वो जो 2 लिखा हुआ है, दैट 2 इज नॉट फॉर ब्यूट बट रादर इट इज फॉर OL. नेक्स्ट वी हैव दिस इज 1 2 3, सो 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल, और दिस इज नॉट कॉमन, दिस इज कॉमन नेम, आईपैक नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल. All of you got this? Yes or no, please tell me. Alia, Aisha, Mariam, Parker, and Rabia. चलिए, that's it for today, है ना? Any doubt from today's class? Sir, हाँ, बोले. for the fourth question, if we like write CH2 CH3 for the answer, like when we attach it, it's Okay. fine, right? Instead of drawing the मतलब- bond line. Yeah, obviously it is fine. तो मतलब थोड़ा हम आलसी आदमी है, इस वजह से बॉन्डिंग हमको अच्छा लगता है, ठीक है? Otherwise it's completely fine. You can attach it like this. CH2 CH3 ना, बिल्कुल अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है? Okay, sir. चलिए, that's it for today, है ना? And please अच्छे से रिवाइज करिएगा. Now your work is going to be to make a sheet for method of preparation of alcohol and method of preparation of phenol. अच्छा, alcohol के preparation में I will ask you to use multiple colors. वो इस वजह से ना, कुछ method of preparation जो है, जैसे for example if you have aldehyde, है ना, तो aldehyde से सिर्फ क्या बन सकता है? You will get 1 degree alcohol, है ना? लेकिन मान लीजिए आप अच्छे से खूबसूरती से बनाइएगा ना, जितना आप मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना लिया तो दोबारा कभी बनाना ही नहीं है. हाँ, आपने एक बार बनाया फिर आपको लगा नहीं इसमें हम कुछ और एडिशन कर सकते हैं, कुछ और यहाँ पे कलर्स ऐड करके इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, देन यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट वंस मोर. जितनी ज्यादा बार आप नॉलेज को अपनी ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर पाथ जो है ना नॉलेज को रिटेन करने का, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा. दोस नर्व्स विल बी स्ट्रेंथन दैट मच, so you can easily remember it. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, जैसे एल्डिहाइड से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं, राइट? और आप कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है? यू कैन मेक अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो. ठीक है? अच्छा, अब इन तीनों के रिडक्शन है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4 LiAlH4 LiAlH4. अब लेकिन एल्डिहाइड से जब आप बनाइएगा तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको 1 डिग्री मिलेगा. सो आप इसको एक अलग कलर, गिव दिस अ डिफरेंट कलर. आपने इसको पिंक दे दिया, तो इसको भी क्या दे देंगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को भी पिंक कलर दे दीजिए, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे यहाँ पे नोट करिए, इसका मतलब 1 डिग्री है ना. उसी में आपके पास क्या आ जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड H, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है? इसका भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होता है RMgBr एंड H2O, तो तभी क्या मिलता है आपको? यू गेट 1 डिग्री अल्फा. सिमिलरली आपका एक और आ जाएगा क्या? RNH2, ठीक है? RNH2 में क्या मिलता है आपको? 1 डिग्री अल्फा. अब जैसे कीटोन मान लीजिए, कीटोन से आपको मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल, राइट? गेट ऑन रिडक्शन यू आर गोइंग टू गेट 2 डिग्री अल्कोहल. तो इसको आपने ब्लू कलर दे दिया, ठीक है? उसी तरह से एक ब्लू कलर किसके लिए आ जाएगा? If you have RMgBr, it is being reacted with any other aldehyde RCHO. आपको मतलब समझ में आ गया? हाँ या ना? All of you guys tell me. Aisha, Mariam, Parker, Rabia and Alia.